अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लुइस पास्चर पढ़ रहे हैं। लुइस पास्चर वाज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट whose theory of fermentation is very famous. In today's lecture we shall discuss his patriotism, his early education, his appointment as deputy professor of chemistry, problem of spontaneous generation and its solution by Louis Pasteur. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पेट्रियाटिज़म एज़ वी नो दैट वो एक बहुत बड़ा पेट्रियाट था। उसने अपने आप को फ्रेंच आर्मी में बहुत दफ़ा इनरोल करने की कोशिश की। एक जगह पे लिखा हुआ था प्लेस ड्यू पैंथियन। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ आल्टर लेबल्ड आर्टियोल डी ला पैट्री, वतन की कुर्बान गाह। He placed all his worldly wealth 150 francs there. वहाँ पे वतन की कुर्बान का लिखा हुआ था एक जगह पे। उसने अपनी सारी की सारी जो दौलत थी, दुनियावी दौलत 150 फ्रैंक्स थी, वो वहाँ पे जमा करवा दी। In 1870 when he was returning from Germany to France and at Strasbourg he heard that France was on the verge of war with Germany. He hurried to Paris and exceedingly disappointed when the military authorities refused to enroll him in the National Guard on the score that he was half paralyzed man. We know that he was a doctor. He was a PhD in medicine and he returned his degree of doctorate received from University of Bonn, Germany, when he came to know that France was at the verge of war with Germany. कुछ और भी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे उसने अपने आप को कहा कि मैं पैट्रियट ज़्यादा हूँ, मैं साइंटिस्ट कम हूँ। तो उसके बाद हम उसकी अर्ली एजुकेशन देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पास्चर था वो बड़े हम्बल सर्कमस्टेंसेस में डॉल जूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस इन 1822 में पैदा हुआ था। उसका फादर जो था वो नेपोलियन का कॉन्स्प्रिक्ट था। कॉन्स्प्रिक्ट्स वो होते हैं जिनको जबरी तौर पर आर्मी में सिपाही भर्ती किया जाता है और उसको अवार्ड भी मिला हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि वो भी कंफ्यूज था कि उसने किस एजुकेशन की तरफ जाना है। तो उसने अर्बॉइस कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज एट अर्बॉइस डिड नॉट टीच फिलोसफी एंड सो आफ्टर टाइम पास्चर वेंट ऑन टू बेसिनकन। अब अर्बॉइस कॉलेज से वो बेसिनकन चला गया, अ बिगर प्लेस विद बेटर एजुकेशनल प्रोविजन। Here he graduated in science and arts and was given a post on the college staff. इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो उसके पास 2 डिग्रीज थी। ही वॉज ग्रेजुएटेड बोथ इन साइंस एंड आर्ट्स। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उसने साइंस में भी ग्रेजुएशन की हुई थी और आर्ट्स में भी ग्रेजुएशन की हुई थी। ही वॉज ऑलरेडी मच इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री टू, much so for the professor of that subject at Washington, whom Pasteur used to embarrass with unanswerable questions. The Pasteur in question disapproved of saying, "I do not know," and used to try to keep Pasteur in his place by telling him that questions were to be asked by the teacher of scholar and not vice versa. अपने केमिस्ट्री के प्रोफेसर को वो तंग किया करता था। In 1842 when he was 20 he went in for entrance examination to the great École Normale in the Paris and came out 14th on the list. École Normale इंस्टीट्यूट में वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए गया तो 14th नंबर पे he was enlisted. He was on 14th number in the list. He was so disappointed and not getting higher place. He took the examination again. उसने दोबारा एग्ज़ाम दिया in the following year आने वाले साल में and was 4th on the list.
which apparently more or less satisfied him. Let's see when he was appointed as deputy professor of chemistry. At this point, one may say a word about his private affairs. In 1848, at the age of 26, he became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg, and here he met his future wife, who was the daughter of rector of the Strasbourg Academy. They were married in 1850, and it seems that Pasteur was so buried in his work on the wedding day that he entirely forgot the ceremony and had to be fetched by a friend. The marriage, however, was extremely happy, and the wife seems to have been an important factor in her husband's work. Dear students, there was a problem. There was an issue of spontaneous generation. In 1860, the French Academy offered a prize for the solution of problem whether spontaneous generation was or was not a fact. क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, ऐसी चीज़ जो खुद ऐसे जानदार जो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, क्या ये हकीकत है या नहीं. एंड पास्चर एंटर्ड फॉर द कंपटीशन एंड सेटल्ड द मैटर वंस एंड फॉर ऑल. पास्चर ने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया और हमेशा हमेशा के लिए इस मसले को सॉल्व कर दिया इन द नेगेटिव नफ़ी में, प्रूविंग दैट इफ़ अ सब्सटेंस be sufficiently heated to destroy all life, and if the air in contact with it be filtered so that it is free of germs, then the substance does not alter. Bacteria do not develop in it. उसने कहा कि अगर आप एयर टाइट आपके पास जो भी चीज़ होगी उसको अगर आप अच्छी तरह सफिशेंटली आप उसको हीट करेंगे, जिस बॉटल में जिस चीज़ में आपने फ़िल्टर करके रखना है उसके साथ जो एयर अटैच्ड होगी इन कॉन्टैक्ट विद दैट सॉल्यूशन, दैट सब्सटेंस डज नॉट अल्टर. इन अदर वर्ड्स, बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप इन इट. As usual, his opponents said that they had obtained opposite results, so Pasteur asked for arbitration, and the Academy appointed a commission before which Pasteur and his adversary were to repeat their experiments. On the appointment day, Pasteur appeared loaded with apparatus. His opponents, however, had none. They said weather was unfavorable and they would like to wait. The commission was very reasonably refused. Pasteur did his experiment successfully and won the prize. In the course of experiments, Pasteur found that some germs are very difficult to destroy by heat. Exemplification: milk developed bacteria even after several minutes boiling, but after raising the temperature 10 Celsius above boiling point, he found that no bacteria were left alive. Next points will be discussed in next video. Allah Hafiz.